am Sandy. And I am Vijay. We have started our 11-day trip to Arunachal Pradesh with Holiday Scout. Arunachal Pradesh is a mesmerizing mosaic of experiences, and these were curated to perfection for us by Holiday Scout, who unravel the treasures of the Northeast like no one else. From surreal landscapes, mystical monasteries, a vibrant culture, warm and welcoming people, the state has it all. And how can you forget the local cuisine that is influenced by the cuisines of India and Tibet? Thanks to Holiday Scout, we were able to make our own momos and have them too in the fairy tale environs of Dirang. A beautiful evening saw us make our way towards the house of our Momo guru, Tsering Dolma. नमस्ते, मेरा नाम सिंह ड्रोमा है। मैं ये दिरांग बस्ती में रहती हूँ और मैं यहाँ टूरिस्ट लोगों को मोमो बनाने के लिए सिखाती हूँ। She welcomed us with a glowing smile and made us comfortable. A bonus was in store for us before we started learning the intricacies of momo making. We learned how to make butter tea using yak butter and downed cups of the hot and invigorating beverage. Keep watching to learn about authentic momo making from our momo guru. कितना बटर डालते हैं, यानी 1 कप बनाना हो तो? 1 कप में ना सर, हाँ। अपना से देख के डाल दीजिए, कभी ज़्यादा भी डाल दीजिए। भाई आप इतना डाल रहे हैं? अब 1 चम्मच से डाल। अच्छा। 1 ही कप के देना सर। हाँ। तो ये कौन सा बटर है? याक बटर। अच्छा। दूसरा नॉर्मल बटर से भी बना सकते हैं? हाँ हाँ सर, उससे बना। अच्छा। जो दुकान में मिलता अमूल बटर, हाँ उससे भी बना। ये दूध डाल रहे हैं? जी सर जी। गरम पानी ले ले सर, जल्दी उबालने के लिए। अच्छा। गरम पानी ले लेना। चेक करती है। किस टाइप का पत्ती है बताइए? बाजार की दुकान का ही सही। अच्छा, चाय। जी। कितना डालना होता है चाय, यानी 1 कप के लिए? जी सर जी, अपना से देख के। हाँ अच्छा। नमक स्वाद अनुसार। हाँ। जी। अमूल इसमें होता है तो ज़्यादा डालने की जरूरत है या थोड़ा सा डालें? जी सर जी। अमूल बटर में है जी। सॉल्टेड होता है। हाँ होता है जी। तो थोड़ा सा हाँ, डालें। थोड़ा सा। हाँ। कितनी देर उबालना है उसको? जो कि चाहिए चाय पत्ती कलर नॉर्मल ना, अच्छा कलर आना है। वैसे पानी उबाला हुआ ही सर। पहले से उबाला। हाँ, वैसे पत्ती को कलर निकालने के लिए। नमक। अच्छा। थैंक यू। इसमें आलू, पनीर, प्याज और तेल, नमक सब जी सब बॉइल्ड? आलू बॉइल और प्याज भी है? प्याज को क्या ऐसा ग्रेट किया? जी ग्राइंडर में पीस के। और कोई मसाला कुछ नहीं है? नहीं है सर। नमक जी और सोयाबीन तेल थोड़ा मिक्स कर लें। थोड़ा सा। और ये मैदा में कुछ और डालते हैं? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं। उसमें तेल आटा गूंथते वक्त? नहीं तेल आप डालने साथ और नहीं भी डाल सकते सर उसमें। अच्छा। तेल ऐसे शेप बनाना है? जी सर जी, आप ऐसे भी बना सकते और ऐसा कीजिए सर जी। ऐसा पिंच कीजिए सर जी, फिर को ऐसा कीजिए, फिर इसको फिर ऐसा कीजिए सर। ऐसे बनता है सर। फिर अब इसको ऐसे कीजिए सर, फिर इसको ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके पिंच करके सर। ऐसे करके सर
नाम है। अच्छा ऐसा अच्छा, ऐसा ऐसा जी, जोड़ना है। हाँ हाँ ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा अच्छा एक तरफ से पिंच करना से इसको ऐसे ऐसे करके। अच्छा अच्छा। मसाला टेस्ट कर सकते कीजिए सर कीजिए। आपका मोमो तैयार हो गया। अभी आप बताइए इसमें क्या क्या डालते, कैसे बनाते? सर इसमें हरी मिर्च को सर तेल में फ्राई करेगा सर, तेल में फ्राई करना है, फिर उसको जिंजर डालना है, अदरक डालना है, और फिर हमें जो सोयाबीन का जो हमें चीज़ होता है सर, जो अपना हाथ से बनाता है वो भी डाल देते हैं सर। तो उसको ऐसे हम ओखली में तो उसको मारते हैं सर, हम ओखली में। अच्छा। तो ग्राइंडर में नहीं पीसते इसको, ओखली में, हमारा जो यहाँ ओखली होता है, हाँ ओखली में हम इसको पीस देते हैं सर। तो उसमें टमाटो को थोड़ा तेल में थोड़ा हल्का सा फ्राई करके टोमेटो को भी साथ में मारते सर हम ओखली में। हाँ नमक स्वाद अनुसार सर, नमक जो देखिए सर। The enterprising lady not only taught us how to make momos and butter tea, but also showed us her skill of weaving beautiful traditional dresses. We thanked our Momo Guru and took our leave, but the experience curated by Holiday Scout lingers in memory, just like the flavor of the momos we made that day. India is a fascinating book without a last page. It is like a melody composed with limitless notes. It's like a rainbow with countless colors. Its rich heritage is a mesmerizing tapestry of experiences. Join us as we virtually relive some of our experiences of traveling across India. Experience and explore India with us as we take off on an exhilarating journey to places across India, some known and some unknown, in our Dekho Apna Desh series.